हेलो। हेलो। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस क्रिकेट 26 में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 5th T20 मैच। तो बने रहिए हमारे साथ। पहले खिला लेते हैं अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, संजू सैमसन लगभग सेम है। संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा खिलाना पड़ेगा हमको। संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा। वेयर इज जितेश? ओके, तो हमने खिला लिया है जितेश शर्मा को, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैच को। Good evening, one and all. You join us for this 2020 match between India and South Africa. I'm Adam Gilchrist, and joining me for what should be an exciting contest is Ali Mitchell. Always a pleasure to sit alongside you in the commentary box. Thanks, Ali. We go out to the middle now. Big decision coming up. Going to bat first. Well, a bit of a surprise call. Can't see the benefit in batting in these conditions. And the bowlers will have a spring in their step. Sharma taking the first ball of the match. Left-hander has fantastic hands. Look to see off the new ball and get stuck into his innings. Gill will be his partner today, starting at the non-striker's end. The umpire signals that we're ready to go. First ball of the innings about to be bowled. ओह नो, बोल्ड हो गया और ये हेनरिक नोकिया ने पहली बॉल में बोल्ड मार दिया है। अभिषेक शर्मा आउट होते हुए। क्या हो गया यार, बहुत ही गलत शॉट खेल दिया यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने, जरूरत नहीं था इसका। अब आए हैं तिलक वर्मा हेनरिक नोकिया का सामना करने के लिए। पूरे खेल दिया 4 रन के लिए। काफी प्यारा शॉट मारा है तिलक शर्मा ने, सॉरी तिलक वर्मा ने। Nokia shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Bang, ball. Just ओह नो, किल्ली उड़ा दिया है नोकिया ने। दूसरा विकेट, नोकिया ऑन फायर। बहुत ही संभाल के खेलना पड़ेगा। अब किसको लाया जाए, किसको लाया जाए? Patel, the left-hander out in the middle, looks keen to get going. Goes for the drive, but it's a wild shot. क्या बॉलिंग करा रहा है भाई नोकिया। Patel, ये वाइड नहीं था। Agar has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. Well, the batter's made a bit of a meal of that delivery. Will you listen to that crowd? They are loving this. It's difficult to hear yourself thinking here. Beats the outside edge. Good bowling there. बहुत ही खराब शुरुआत हुई है भारत की यहाँ पे। Misses everything. End of the over. 5 off it. India are 5 for 2. First over gone, and a respectable start by the batters. Jensen, the pace bowler, coming into the attack. क्या हो गया यार ये?
Oh, that's missed the lot. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही घटिया स्थिति है। साउथ अफ्रीका कमबैक करती हुई यहाँ पे। No, no, no. Terrible shot. नो बॉल नहीं था भाई, क्या यार, साफ नो बॉल था। Went for the drive, complete miss. Swept away but finds the fielder. आइडियल था, कभी भी नहीं लगा। That's the over. India are 5 for 2. Not such a productive second over. Bowlers reined them in nicely. नहीं, क्या छूटता हुआ, छोड़ दिया। यहाँ पे एक और विकेट मिल सकता था साउथ अफ्रीका को। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट 6 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट मारा सुमन गिल ने। Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There's no point chasing that. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Cuts that off well in the infield. ओ, मारा क्यों नहीं भाई, हाथ में था, मुझे लगा रन आउट हो। Really wound up for that. Ball seemed to ये come वाइड onto होना that quicker चाहिए than he thought. कनेक्ट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे अक्षर पटेल से। The batters are just looking too comfortable out in the middle. So no change to the run rate. The batters need to think about taking some risks soon if they want the best results from the power play. और ये मुंह पे मार दिया है, जॉनसन ऑन फायर। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट, अपने कैच ना हो जाए। कैच कर लिया गया है, सही गिल आउट होते हुए। शुभमन गिल का ट्रेडमार्क शॉट था, लेकिन बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए और 7 रन बना के आउट होते हुए। Yadav, the new man in the middle, has a lovely technique and will look to get into his work quickly. First ball for the batter, coming in. रैम शॉट क्या मार पाएंगे यहाँ पे, पॉसिबल है। नहीं लग पाया, कनेक्ट नहीं हो पाया। Over
India 14 बड़ा ही for 3. Well, बुरी they've स्थिति really है। dropped off from their initial rate. Some very good bowling, but the batters need to pick up the pace a bit now. Going with pace now. मच्छर पटेल क्या कर रहा है भाई? बॉल कहाँ रही है, मार कहाँ रहा है भाई? और ये कनेक्ट हो गया लेकिन कैच नहीं होते तो फिर भी कैच कर लिया। Left-hander out in the middle, almost ready to face their first ball. Someone did. क्या कैच था भाई? Different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Massive appeal. Out हो गया Might have यार। just been missing though. बच गए। Oh, outside edge. It'll be he's safe there. and another boundary. The bowler is in disbelief on that one. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को कुछ करना पड़ेगा। Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. और ये पागल हो गया है जॉनसन यहाँ पे। क्या था ये? जॉनसन जी पागल हो गए हैं जोश में। Another pour over completed. The batters are starting to have a field day out there. The momentum, it's all in one direction. It's a tough start, but soon the field will spread and they can start pushing for 2s and 3s. Great shot. At least one on offer. यहाँ पे इनिंग बिल्डअप करना पड़ेगा।
नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। शाबाश, सब पागल हो गए। They'll get at least one here. On. Nice shot. Runs possible. बैटमैन अपनी अगली गेंद के लिए रनों पे दौड़ते हुए देखना शिवम दुबे कैसे खेलते हैं। और 1 रन के लिए खेल दिया है यहाँ पे और 2 रन पॉसिबल हो जाएगा क्या? रन आउट ना हो जाए। ओ, बच गया। End of the over. 9 runs coming from it. India 32 for 4. They just haven't got going, have they? Been a great bowling performance, though. Bosch coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. Middled that one, great timing. Oh, what a great piece of fielding. 4 runs saved for sure. Threw the hands at it, got it early, but enough on it to get 4. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries. Just to keep सूर्य them कुमार guessing. खेल रहे हैं 15 बॉल पे 11 रन के साथ। Shot. There's someone out there, but they should get back for 2. और Good सुपर stop. Probably managed to prevent 2 4 रन के लिए runs. खेल दिया सूर्य कुमार यादव ने। बैटमैन आए हैं नए बॉलर बैटमैन। काफ़ी दयनीय स्थिति में है भारत अभी और शिवम दुबे बॉल को टच नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही स्लो रन रेट से खेलते हुए। उठा के खेल दिया है और ये शानदार कैच और शिवम दुबे को चलते किया। Great stuff. क्या हो गया है भारतीय बैटर को? एक के बाद एक कैच दे के चलते बन रहे हैं। क्या ही शानदार डेविस ने कैच किया है और जाना पड़ेगा शिवम दुबे को।
Sharma out in the middle. Lovely पांड्या player से to watch पहले once गंभीर ने in. शर्मा को He's भेजा quite है. relaxed too. Straight drive, mid-off. Oh, no, no. क्या यार. पकड़ लिया यार, हमको लगा नहीं पकड़ पाएंगे. Hardik, the new man in, but will start from the non-striker's end. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. वाइड बॉल करते हुए बॉस यहाँ पे. Finds the middle, but won't find the boundary. Good return back from the deep. बहुत ही शानदार 2 रन लेते हुए यहाँ. Pandya. उठा के खेल दिया यहाँ पे. आगे बॉल गई 6 रन के लिए. In the air this time, but it's 4 more. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front. हार्दिक पांड्या यहाँ अपना गियर बदलते हुए. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Straight to the fielder. They may have overstepped. The captain shouldn't be और disappointed free by hit. the effort. Just need to नो बॉल adjust मिला the है run. फ्री हिट पांड्या को मिलते हुए. They're going to go in for the kill with this delivery. It's up to the new batter to make sure the fielding side doesn't pick up any more momentum. फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पे हार्दिक Seems to have पांड्या. forgotten फ्री where हिट the का crease बहुत ही is. शानदार बॉलिंग बॉस द्वारा. और एक और फिर से This फ्री is the हिट. time as a bowler where you need to put those last few deliveries behind you. Just focus on the basics. Drive straight down the ground, mid-on. फिर से एक बार बहुत ही टाइट लाइन पे यॉर्कर. कुछ खास नहीं कर पाए. फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए हार्दिक पांड्या. ब्रॉडमैन की बॉल क्या स्विंग कर रही है भाई. Nice shot, straight to gully. Flex that one, simple as you like inside the ring. ब्रॉडमैन अपने रनअप पे अगली बॉल के लिए. सामने हार्दिक पांड्या. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? Big appeal. This could be out. ये यार ये क्या था. हार्दिक का Pandya looked really confident in reviewing that. Did look out to me though. Pitching in line, just a case of whether it's hitting the stumps. Slightly unlucky, just clipping the stumps, and they have to go. हार्दिक पांड्या बहुत ही अनलकी.
टॉस फल Big पे great आउट होते decision by the हैं umpire. और Challenge भारत को कौन wasn't बचाएगा? successful. Singh, the left-handed batter, taking guard. Well, wants a solid start. Wow, that's missed the lot. Dug that out well. Over the top it goes. It was a faint top edge, but it zipped through with pace. क्या था ये That'll भाई? be 4 more. That's just a What is brilliantly this? aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. एक बार फिर से देखते हैं। Boundary. तो भाई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 4th T20 मैच खेल रहा हूँ मैं यहाँ पे और बॉलिंग कर रहे थे बैट्समैन और सामने थे अर्शदीप सिंह। और देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है। ये रही बॉल, ये हटा और ये मारा और बॉल गई ऊपर आसमान में। कैमरा डैश कर नहीं पा रहा। Fast delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Misses. How did that not hit? नहीं, Massive आउट नहीं appeal. हुआ। Might have just been missing though. लेग साइड से कहाँ? बॉस फिर से बॉलिंग पे आते हुए सामने है जीतेश शर्मा Great और इस shot. करारा शॉट मारा है, 4 रन मिलना चाहिए। हाँ, Well, the delivery was poor. Still needs to be put away though. And what a lovely shot to find the boundary. क्लासिक शॉट जीतेश शर्मा द्वारा। This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Goes for the drive, but it's a wild shot. लॉग इन कर दो, बॉल मिस हो गया। No, no, no. Terrible shot. टेरेबल शॉट। Went for the drive, complete miss. बॉल बल्ले पे आई नहीं रही। Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Norkia coming back into the attack has done well so far. Misses everything. Beats the outside edge. Good bowling there. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot.
The batter's made a bit of a meal of that delivery. Top edge and just over the keeper. Might have been a little bit late reacting, but the ball runs away to the rope. Well, didn't time ये that से at चौका all. मिलता हुआ यहाँ पे Managed to get it away to the boundary. Jensen coming back into the attack. They'll be wanting to improve their figures a bit. A quick wicket would work nicely. There'll be runs here. ये तो नो बॉल था यार, ये वाइड था। Jensen with a huge appeal. Big appeal. This could be out. Yeah, that could have been missing the stumps. Not the worst review. Height shouldn't be an issue. It's impacted in line too. इतना स्विंग, वाह, इतना स्विंग हो गया यार। Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire, though. Chakravarthi, the right-hander coming in lower down the order. Always nice to put some scoreboard pressure on the opposition. Well मैंने timed, but खोजा there's a भाई, fielder मैंने out there. खोजा। आइडियल तो ये छक्का नहीं गया। Shide, should be runs here. That's a boundary save for sure. Scamper through for a single, good running. Bosch back into bowl here. They'll be wanting to improve their figures. A wicket would do nicely. The bowler and the slips have really gone up here. They like it. And the spectators here at the moment, they're absolutely captivated by what they're watching. Swept away, but finds the field. Oh my word, fast reflexes and grabs it. Stunning catch. पार नहीं हो पा रहा यार आगे। जीतेश शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी चलते बने। Bumrah, the India new का लास्ट विकेट batter, जसवीत बुमराह। right-hander coming in down the order this match. He's got their tail up. End of a really good over. Gets a wicket and really slowing down the scoring pace. It's been good bowling. Batters just haven't adjusted to the conditions tonight.
Norkia coming back into the attack. Oh no, what a chance. That's going to race to the boundary. बड़ा ऊंचा ग्रोथ नहीं, यहाँ पे 4 रन का इजाफा किया है भारतीय स्कोर कार्ड में। नोकिया आखिरी विकेट जल्दी चटकाना चाहेंगे इंडिया की। Stunning stop. I thought that was a boundary for sure. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. They'll get at least one. काफी क्लासिक शॉट मारते हुए वरुण चक्रवर्ती 1 रन। नोकिया अगली बॉल देखते हैं कहाँ डालते हैं। That's a strong appeal. What's the umpire's decision? इतना आगे से खेल रहा है भाई, एक को आउट। Beats the bat. Jeez, how has that missed the stumps? Peach of a delivery. Markram comes back into the attack. The runs have slowed. They're a good option to continue tying these batters down. Massive outside edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Oh, great ball. The runs have dried up. A good opportunity to find some rhythm this time around after struggling earlier. Square cut, finds point, no run. Bad decision making, thrown it to the wrong end and let the chance go begging. Oh, great shot. क्या Not शॉट going to beat मारा, the fielder. That was a boundary. The क्या moment shot the मारा है ball यहाँ left पे। the bat. Can't time that any better. Perfection. Chakravarti has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Bowling fielders look really confident. Big appeal. This could be out. This total is well below par, and the openers are going to be looking to close this out quickly. The bowlers are going to have to find something to make up for the rest of the batting team's failures. Come on, Bumrah. First ball for the batter, coming in.
Full toss and worked off the pads nicely. Could well be 4. Never an extra run on that arm. Great throw back in from the deep. कहाँ है भाई फील्डर? Shot, should be runs here. Finds the fielder with that shot. Worked away. That's a nice single. They'll get at least one here. Doesn't beat the infield. Five runs added in. इतना कम रन है South कि- Africa are 5 for none. First over of the power play finished, and it's a steady start for the batters. A new bowler is coming into the attack. अर्शदीप सिंह आए हैं बॉलिंग करने के लिए. That'll be a dead ball. Great shot. At least one on offer. इनर सर्कल से एक रन चुराते हुए. Hendricks with a Wow. leave. Didn't like the width. क्या था ये? Hendricks left it alone. Didn't want to chase the wide one. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Finds the middle, but won't find the boundary. Left alone by the batter. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. Massive outside edge. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond.
Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. The captain's going to change things around in the field. Nice shot, straight to gully. Shot, at least 2 on offer. They may have overstepped. The captain shouldn't be disappointed by the effort, just need to adjust the run-up. Boom, overstepped by a fair way. You don't want to be giving away extra deliveries too often. Whacks the free hit away. Fielder coming around to cut it off perhaps. फ्री हिट पे आउट हो गया है लेकिन Leading edge lands safe from hands though. It's got to follow up that last delivery. Found the edge but no reward, but putting pressure on the batter. बुमराह काफी जोर लगाते हुए विकेट के लिए. Great work behind the stumps. Saved some runs with that dive. It's a leading edge, but just doesn't carry to the fielder. Hendricks, fortunate there. और एक विकेट ले लिया है यहाँ पे बुमराह ने पहली सफलता दिलाते हुए इंडिया को. एक छोटे स्कोर को डिफेंड करते हैं. रिचा हेनरिक्स आउट होके जाते हुए एक चौका मारा, 7 रन बना के आउट. Markram, the right-handed batter, out in the middle, doing some quick final checks. Some adjustments to the field. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Couldn't get it through the field. Avoided the fielders, 1 bounce and 4 fantastic shots. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come.
Clipped away neatly off the pads. Should get 4. That's a stunning stop. That was going all the way otherwise. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. How will the bowler respond? Nice shot, just a flick off the pads. Oh, that's cut off nicely. 4 runs saved. Poor over. The captain's going to have to make big decisions on this bowling attack if this continues. That's 4 overs down in the power play, and they've batted कराना really well. Good running and shot making sees them ahead of the required run rate at the moment. बुमराह से मजबूरी में तीसरा पूरा करना पड़ेगा. Might look to go big again here. Hit that hard and fast. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. That was a good strong throw back in, right over the stumps. Jeez, time that well. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Nice shot, straight to gully. Drive straight down the ground, mid-on will collect that one though. Nice shot, runs possible. Can't get that outside the ring field. Another over where runs are just too easy to find. These batters are seeing the ball really well. The confidence is starting to build. The bowlers have been steady. Just some bad balls amongst the good deliveries, which sees their opposition ahead of the required run rate at the moment. There could be a couple if they hustle. Driven through cover, just the one. Great shot, at least one on offer. Good return there, back from the deep. Come on, Hardik, come on.
कुछ हो तो नहीं सकता, कम से कम 2-3 विकेट ही ले ले भाई। Flex that one, simple as you like inside the ring. इन लोगों का पार हो जा That रहा was a है। solid shot, really well played. Ball was dropped just a little shorter, and a great shot off the back foot. Over, South Africa, 52 for 1. Just ahead of the required run rate right now. One more over in the power play. Possibility of making some gains to their advantage next over, perhaps. Was quick onto that in the infield. Scamper through for a single, good running. Gets that away. Starting to hit their stride. Fabulous piece of timing, and they're into the 20s. Pandya shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Markram wants a fair piece of this bowler. Driven again. In the air this time, but it's 4 more. Four runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. Wow, that's missed a lot. Pulled away, but straight to square leg. Square cut, finds point, no run. Finds the fielder with that shot. End of the over. South Africa are 64 for 1. They've done well. Sometimes after the power play, the run rate can drop a bit, but the batters have kept up the intent they had early on, and this run chase looks secure. Interesting decision to change the bowling. Found the going tough earlier with the ball. A huge challenge with how well these two are scoring.
Doesn't beat the infield. That's gone down. Timed that perfectly. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Will you listen to that crowd? They are loving this. It's difficult to hear yourself thinking here. Straight to the fielder. End of the over. 7 off it. South Africa are 71 for 1. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Cuts that off well in the infield. ये तो आउट था भाई, अपील क्यों नहीं कर रहे हैं भाई लोग? अपील क्यों नहीं हो रहा है? ये यार, ये तो आउट था. ये तो आउट था साला, कोई अपील नहीं किया. व्हाट इज दिस? भाई लोग, मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 4 T20 आई मैच, और यहाँ पे हार्दिक बॉलिंग कर रहा था. अब आप ही लोग बताओ ये ग्लिच है क्या है? ये हार्दिक ने बॉल डाली और ये पक्का मिडिल में पिचों की है. ये LBW था, लेकिन पक्का LBW था, लेकिन अब ना कोई अपील हुई ना विकेट मिला. मैं खेल रहा हूँ T20 आई इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 4th T20 आई, और बॉलिंग कर रहे हैं हार्दिक पांड्या. सामने साउथ अफ्रीका के बैट्समैन. और ये देखिएगा ये क्या ग्लिच है क्रिकेट 26 का. ये हार्दिक पांड्या ने बॉल डाली, जस्ट अराउंड मिडिल स्टंप पे पिच हुई है और पैड पे लगी.
मैं खेल रहा हूँ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 आई फोर्थ, और हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे हैं। सामने साउथ अफ्रीका के बैट्समैन। अब ये ग्लिच देखिएगा कि 26 से क्या ही ग्लिच है। ये पांड्या ने बॉल डाली, बॉल मिडिल स्टंप पे पिच हुई और सीधे जाके पैड पे लगी, लेकिन ना तो किसी ने अपील की ना अंपायर ने आउट दिया। Does very well to quickly get across to this one. ये भी सेम था, ये भी सेम बॉल थी, इसको आउट होना चाहिए था। एटलीस्ट अपील तो करते। Yeah, we need to have a look at that again. हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल ने यहाँ पे विकेट लेते हुए Brilliant, great विकेट poise. निकाल लिया है। मैच भले ही हार चुके हैं, लेकिन अपना टैलेंट दिखाते हुए यहाँ पे अक्षर पटेल जसवीर ने डैम मार के कैच किया। Stubbs out in the middle. Lovely player to watch once in. Looks quite relaxed too. मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फॉर T20। अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे हैं और क्या ही विकेट निकाला है यहाँ पे। मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फॉर T20 आई, और अक्षर पटेल ने देखिएगा दोस्तों क्या ही विकेट निकाला है। हालांकि टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं, 13 रन रह गए थे। फील्डिंग के अकॉर्डिंग बॉल करते हुए और ये क्या ही जसवीर बुमराह ने कैच लिया, क्या शानदार कैच था। ये बॉल जा रही है,
First ball for the batter, coming in. Giant should be runs here. Good throw from the deep, bang on target. Swept away but finds the fielder. Nice shot, runs possible. There could be a couple if they hustle. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, you just got to accept it and move on. Straight drive, mid-off will cut that one off. The match ends in a tie. We have a super over to decide the outcome. ओ भाई ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये मैच टाई हो गया बारिश की वजह से. व्हाट इज दिस, क्या था ये? ओ भाई क्या था? Good evening, one and all. You join us for this T20 between India and South Africa. I'm Adam Gilchrist, and alongside me इंडिया ने टॉस today is जीत के Ali बैटिंग Mitchell. करने का Thanks for डिसाइड the किया है. fabulous introduction. We're just about ready to get आप देख रहे हैं underway. इंडिया वर्सेस साउथ Thanks, अफ्रीका Ali. फॉर Looks T20 like आई the मैच. captains are ready for the toss. Let's go pitch side. Not sure what was running through the captain's mind there. This pitch will only get easier to bat on. So why bat now? The bowlers could have a field day. Sharma taking the first ball of the match. अभी शर्मा हेनरिक नोकिया का सामना करने के पहली बॉल पे. हेनरिक नोकिया पहली बॉल के लिए तैयार. ओ ये मिस कर दिया यहाँ पे पहली बॉल पे ही. अभिषेक शर्मा जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं वही अप्रोच अपनाते हुए सीधे आर या पार की लड़ाई में विश्वास रखते हैं. और ये मार दिया घुमा के 4 रन के लिए. बॉल बाउंड्री राउंड से बाहर जाती हुई. नहीं, चौका रोक लिया जाएगा. 2 रन मिलने हैं.
काफ़ी अच्छी फील्डिंग साउथ अफ्रीका फील्डर द्वारा। और ये वाइड का इशारा अंपायर का। नोकिया अपनी अगली बॉल के और इसको खेल दिया, लेकिन सही शानदार कैच कर लिया यहाँ पे अभिषेक शर्मा आउट होते हुए अपने 2 के निजी स्कोर पे। शॉट बढ़िया था लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। स्क्वायर कट के लिए और काफ़ी शानदार फील्डिंग है यहाँ पे। तिलक वर्मा आए हैं अगले बैट्समैन। रिसेंट मैचों में काफ़ी ही बढ़िया प्रदर्शन किया है इन्होंने। क्या था भाई, ये क्या हो रहा है? What is this? What is this? ये क्या हो रहा है? 2 बॉल में 2 सफलता मिलती हुई अमित नोकिया को। तेज से बीट होते हुए अगले बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव। सूर्य अपना खाता खोलते हुए। मार्को जेनसन भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे हैं रिसेंट मैचों में, उनको खेलना आसान नहीं होगा। क्या था ये? इंडियन बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह हल्की सी स्विंग की अंदर की तरफ बॉल आई और सूर्या मिस कर गया। अब यहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत है। एज हो गया, चौका चला गया। संजू सैमसन से एज कर दिया था। एज निकलता हुआ विकेट कीपर के ऊपर से 4 रन के लिए। और बाहर, काफ़ी बाहर पिच हुई है लेग स्टंप से, आउट होने का सवाल ही नहीं है।
संजू सैमसन ने यहाँ अपना ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए और 5 रन के निजी स्कोर पे आउट होते हुए शिवम दुबे अगले हैं बल्लेबाज। दस रन पे 4 विकेट इंडिया के। हार्दिक पांड्या ने बहुत ही शानदार क्लासिक ड्राइव मारा है 4 रन के लिए। मैच काफ़ी रोमांचक होता हुआ, इंडिया काफ़ी दयनीय स्थिति में। देखना है हार्दिक पांड्या यहाँ से निकाल पाते हैं एक साझेदारी करके जितेश शर्मा के साथ। नहीं नहीं भाई नहीं, जितेश शर्मा को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एज लग के चौका जाता हुआ। इस समय जैसे भी रन आए भारतीय टीम में स्कोर में इजाफा हो, जब तक रन आने चाहिए। काफी शानदार शॉट यहाँ पे और 4 रन मिलता हुआ जितेश शर्मा को। काफी बढ़िया तरीके से ग्राउंडेड शॉट खेला बिना कोई जोखिम के 4 रन पहुंचाया। जॉनसन जो कि काफी बढ़िया शानदार बॉलिंग कर रहे थे, उनके चौका मारना इतना आसान नहीं था। नहीं भाई, रनआउट की जरूरत नहीं है, अभी रनआउट नहीं होना है। एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है। देखना है ये पार्टनरशिप कहाँ तक भारतीय बल्लेबाजी को ले पाती है। काफ़ी ज़्यादा बाहर वाइड का एम्पायर का सारा। फिर से वाइड देते हैं एम्पायर, नहीं वाइड नहीं मिला।
काफ़ी बढ़िया हेनरिक नोकिया द्वारा बॉलिंग होते हुए ऑफलाइन को पकड़ के रखा हुआ है रिच से बाहर। अभी स्लॉगिंग की ज़रूरत नहीं है, हार्दिक पांड्या को समझना होगा और साथ में जीतेश शर्मा को भी। 5 विकेट ऑलरेडी डाउन हो चुका है 5 ओवर में। अभी स्लॉगिंग की ज़रूरत नहीं है, अभी कम से कम 12 ओवर तक आराम से खेलना पड़ेगा इन दोनों को। और बहुत ही ज़्यादा स्विंग होती है बॉल, बैट्समैन को काफ़ी स्विंग मिल रहा है यहाँ पे। फिर से एक बार बाहरी किनारे से 4 मिलता हुआ हार्दिक पांड्या को। काफ़ी लेट खेला और एज लगा, गैप में गया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना था। बहुत से हैं अगले बॉलर के रूप में अपनी पहली गेंद डॉट निकालते हुए। खेल दिया उठा के और सीधे फील्डर के हाथ में। हार्दिक पांड्या अभी नहीं माने, ये आउट होते हुए। दस रन बना के हार्दिक पांड्या बॉस का शिकार बना। और आखिरी बैटिंग जोड़ी इंडिया के लिए मैदान पे। जीतेश शर्मा, अक्षर पटेल, भारत की आखिरी उम्मीद। उस समय क्रीज पे बैटिंग करते हुए।